Yo, what is up, भाई? My room is a mess first and foremost, so I do apologize. तो आज का topic of discussion भाई, I really regret not studying hard enough for JEE क्योंकि a lot of things really did depend on that JEE score, man, that percentile. First and foremost, channel जिंदा रहता था. People would watch me. I feel like the main reason I was relevant was because I was someone who was studying for JEE or relatable दिखता था. And if I was someone who came out of that phase successful, it would have been a whole different story. My channel would be alive instead of like dead, bro. Like how many views did my last video get, bro? Let's check it out right now in real time. 24 views in 17 hours. That really sucks, man. Especially because like I put in so much effort and time and dedication towards getting successful on YouTube. And this is what happens. Channel dead. Trying not to let it demotivate me, trying to upload regardless. It's whatever, bhai. So coming back to my main topic of regret, I'm in a tier 3 college now. So I don't know how to feel about that. I'm not trying to complain or trying to look down at it because like वो भी मिला सो बहुत बड़ी बात है भाई मेरे लिए. लाइक हालत इतनी ख़राब हो गई थी एंट्रेंस एग्जाम्स के टाइम कि tier 3 कॉलेज मिलना भी इट्स लाइक अ ब्लेसिंग भाई. हाँ, प्लेसमेंट्स के टाइम मालूम होता. प्लेसमेंट्स के टाइम पूरा गान मारे जाती भाई. तो अब के वास्ते अच्छा दिख रहा. अरे भाई tier 3 कॉलेज में एटलीस्ट ये मिला भाई, इमेजिन ये भी नहीं मिलता था. जब प्लेसमेंट के टाइम 3 lakhs per annum वो आता ना भाई, जब बोलो आई एम ग्लैड आई गॉट इनटू tier 3 कॉलेज. तो वही भाई, लाइक अभी एक वीडियो देख रहा था मैं IIT बॉम्बे की. एंड लाइक मेरे को इतना सारा रिग्रेट हिट हुआ भाई. और ये रिग्रेट जब नहीं हिट हुआ था व्हेन आई चेक माई परसेंटाइल, व्हेन आई गॉट रियली शिट परसेंटाइल. लाइक ये रिग्रेट जब नहीं हिट हुआ था, अब हिट हो रहा क्योंकि लाइक आई रियलाइज लाइक आई लॉस्ट दैट पोटेंशियल, दैट चांस ऑफ गेटिंग इनटू IIT बॉम्बे. ऑफ कोर्स एक चांस है अभी भी, M.Tech कर ले सकते हैं IIT बॉम्बे से, मगर इट्स नॉट द सेम एज डूइंग योर B.Tech फ्रॉम IIT बॉम्बे भाई. M.Tech के वास्ते देयर आर सो मेनी बेटर कॉलेजेस. लाइक B.Tech फ्रॉम IIT बॉम्बे इज़ द मेन थिंग भाई. लाइक जब IIT बॉम्बे के स्टूडेंट है बोलते लाइक पीपल ऑटोमेटिकली सो अच्छा B.Tech कर रहा. इट्स नॉट द सेम भाई. लाइक जो वैल्यू रहती, जो वो रहता ना भाई, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट? I don't know how to explain this, magar. Doing your B.Tech from IIT is like the main cream of the cream type shit, bhai. तो हाँ भाई, your boy is वो post JEE regret अब hit हो रहा भाई जा के. I don't know why. मैं JEE के ऊपर वीडियोस बनाना छोड़ दिया था. ऑलमोस्ट 2-3 महीने से वीडियोस नहीं बनाया, मगर it just hit me like right now. The regret of not getting into IIT. How many months after JEE, भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 months after JEE regret it हो रहा भाई. भाई it takes me time भाई. जब grief process करना पड़ता ना दिमाग को, टाइम लगता है भाई. तो you have to understand 10 महीने बाद मेरे को regret it हो रहा है भाई. तो sorry about that, I have a bit of a cough. तो वही भाई 10 महीने के बाद regret it हो रहा अपने भाई को. So just bear with me, bhai. It takes me time to process information, and it took me 10 months to process my shitty percentile. So yeah, bhai, just the regret. Like I could have lived such a better life. Academics भी थोड़े ठीक ठाक रहते थे. IIT में गए बोले तो वो एटलीस्ट समाज में इज्जत मिलती थी भाई. Of course, MJ. I go to MJ CET. Like that's the college I go to. ठीक college है भाई. It's fine. It's all right. I'm having fun, I'm making memories. I'm just trying to make the best of my situation if I'm being totally honest with you. Sure, bhai, abhi tier 3 college mein hai, but that doesn't mean I can't make something of myself. Magar at the same time, bhai, agar IIT mein rehte the, I would have been someone already. Like I wouldn't have to make something of myself. I would already be something. You know what I'm trying to say, right? Like मेरे को जितनी मेहनत करना पड़ता अब because I'm in a tier 3 college, I would have to do 5 times less effort if I was in IIT, I believe. I don't know how IIT's life is, so I can't really compare the difference in the amount of effort I have to put in versus if I was in IIT. Maybe IIT life is 10 times worse. I don't know, bro. I don't know how it is. मगर फिर भी भाई वो IIT टैग मिल जाता था तो इतना सुकून मिलता था भाई ज़िंदगी में. Such is life, bro. You don't always get what you want. और what can we say भाई? कैसा फील हो रहा मालूम भाई? एक डेड रिलेटिव रहते ना भाई, रिलेटिव मर जाते,
फिर जब हिट नहीं होता भाई, जो पूरा था ना स्टेजेस ऑफ डिनाइल में शिट नहीं था मैं भाई, लिटरली डिनाइल अब शुरू हो रहा कि शिट भाई जेई का जो चांस था वो हाथ से निकल गया. ऑल्सो आई शावर्ड ब्रो, सो आई एम लुकिंग काइंड ऑफ फ्रेश आउट. मैं शैम्पू करा बालों को. या भाई लाइक दैट्स जस्ट द थिंग, द रिग्रेट्स गेट हिटिंग नाउ. मैं रात भर नहीं सोया एक्चुअली भाई, लाइक यू कैन सी द टाइम हियर. ओ शिट, अरे 5:23, it's 5:23 AM. I haven't slept. 6 घंटे लगे भाई रिटार्डेड असाइनमेंट करने के लिए, लिटरली कॉपी पेस्ट करना पड़ा, गंदा रिटार्डेड असाइनमेंट भाई. दिस इज़ द टाइप ऑफ शिट यू हैव टू डील विद इफ़ यू आर इन अ Tier 3 कॉलेज भाई. रिटार्डेड असाइनमेंट्स, रिटार्डेड रिकॉर्ड्स भाई, लाइक कॉपी पेस्ट करके लिखना है. व्हाट्स द फकिंग पॉइंट भाई. आई गारंटी यू ये IIT में नहीं होता कॉपी पेस्ट. ये रहा PDF, ये नोटबुक में होना है. व्हाट द फक, व्हाट्स लाइक, इट पिसेस मी ऑफ सो मच भाई. IIT में 0% चांस है ये होता भाई कि ये रहा PDF, यू हैव टू कॉपी इट इन दिस बुक एंड इन दिस record. Like what the fuck, it's just so dumb. Like my brain can't fathom it भाई, because it's so retarded. Missed out on a lot of things in my life. Like I have many regrets in my life if I'm being totally honest with you. And I feel like one of the biggest regret is not getting into IIT. Who knows bhai, I'm not trying to dwell on the past for too long. Magar I do realize the value of what I've lost, the opportunity I've lost. I'm not trying to blame the circumstance. I take full accountability for it. You know, अगर ज़्यादा मेहनत कर लिए तो एक ठीक ठाक NIT भी मिल जाता था होगा. Who knows bhai. I just fucked it up bhai. Like the thing is like I messed up and I lost the opportunity to get into IIT or get into NIT. Completely my fault. So फिलहाल the plan for now, I'll study until 7 and then until 7:30 I'll study for like 2 hours. So for the next 2 hours I'll study, and then my cousin is coming and then we're both going to the gym. But before that we're having breakfast. So breakfast करेंगे and then we'll go to the gym. I'll come back, shower and then I'll go to college because आज college है भाई, Saturday है आज 10 बजे से है कॉलेज. सो थोड़ा चिल है भाई, मामला चिल है. तो वही 10 बजे से कॉलेज है एंड देन आज हाफ डे है. मगर आई एम प्लानिंग टू गो टू अ बूट कैंप. लाइक वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं हम लोगों को, ECE बेसिक्स. एंड यू नो आई जस्ट फेल्ट लाइक studying ECE. I don't know why, just something I felt like doing. तो वही भाई, your boy is studying electronics. I almost did take electronics as my major instead of data science. But some circumstances happened and I decided to take data science instead of electronics and communication engineering. It's just life, bro. Life's very unpredictable and you never know what's going to happen, bhai. Maybe getting into MJ was the best move that could have happened to me. Maybe IIT was not meant for me. Maybe I was not meant for IIT. Maybe even गलती से मैं JEE Advanced निकाल लिया बाद I wouldn't be able to survive in IIT because maybe I'm not that smart. Who knows, bhai. I'm not trying to demean myself or say I'm dumb. I am retarded. I will accept this. मगर I'm not trying to say कि I'm clinically retarded, bhai. I'm retarded on purpose. तो वही भाई. You can't really tell what's best for you because you don't know that. What you think is good for you may be little poison for you. You never know, bro. So I think, yeah, okay. So as I was saying, आज workshop है भाई. Like basic electronics engineering सिखा रहे, like basic components and shit. So I'm going to attend. It's gonna be fun, I guess. कुछ ना कुछ सीखेंगे भाई. और स्किल्स सीखने के लिए भी टाइम निकालना है भाई. माँ का फाइट यार हो. स्किल्स नहीं सीख रहा हूँ मैं भाई, तो क्योंकि मेरे इंटरनल्स आ रहे हैं ब्रो 22 से. सो लाइक इन 1 2 3 4 in 4 days I have my internals. 5 days if we include today. माँ का फाइट यार हो. शिट, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा इंटरनल्स के वास्ते. आई एम प्रॉब्ली गोइंग टू फेल बट आई डोंट वांट टू फेल. तो ये 5 दिन में क्या हो सकता है देख लेंगे भाई. लेट्स जस्ट सी व्हाट आई विल मैनेज टू पुल. Sorry, I told you I had a cough. So we'll see what I'll be able to pull off, bhai. I don't know what I'll be able to pull off.
So I think I'll end the video here. I hope you have a very elastic day, bro. This is your neighborhood friendly civil signing off. Sorry about that. That's just my soundbar. This is your neighborhood friendly civil signing off. I hope you have a very elastic day, bro. And as always, bye.